हेलो नीट एस्पिरेंट्स। इमेजिन करो आपकी नीट ऑल इंडिया रैंक 5 लाख, 7 लाख या इवन 8 लाख के आसपास है एंड यू हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड कि एमबीबीएस का चांस ऑलमोस्ट ओवर है। बट महाराष्ट्र के 2025 एडमिशन डेटा में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स वेरी हाई ऑल इंडिया रैंक्स तक क्लोज हुई थी, some even beyond 8 lakh all India rank. Surprising? Definitely. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 8 लाख रैंक पर MBBS गारंटीड है, बिकॉज यहाँ हम नॉर्मल गवर्नमेंट स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहे। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल कोटा और IQ सीट्स इन महाराष्ट्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ एलिजिबिलिटी, कंपटीशन, फी स्ट्रक्चर एंड काउंसलिंग डायनेमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। 2026 में महाराष्ट्र में MBBS सीट्स कितनी इंक्रीज हुई हैं, महाराष्ट्र से नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2025 में इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स किस ऑल इंडिया रैंक तक क्लोज हुई थी। By the end, you should be able to identify whether IQ should even be a part of your 2026 counseling strategy. अब एक important mistake students करते हैं, वो Google पर टाइप करते हैं 5 लाख रैंक पर MBBS कॉलेज और जो फर्स्ट कॉलेज नाम दिखता है उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। बट काउंसलिंग में रैंक अकेले इनफ नहीं है, 3 चीजें साइमल्टेनियसली चेक करनी है। नंबर 1, कोटा। आप स्टेट कोटा देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा देख रहे हैं या MCC काउंसलिंग। नंबर 2, द बजट। IQ सीट एकेडमिकली एक्सेसिबल हो सकती है बट फिनेंशियली प्रैक्टिकल है या नहीं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक एंड द राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज का नॉर्मल ओपन कोटा कट ऑफ 50,000 के आसपास हो सकता है, वाइल उसी कॉलेज का IQ क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक सेवरल लैक्स तक जा सकता है। सो कॉलेज का नाम सेम है बट सीट कैटेगरी कंप्लीटली डिफरेंट है। करियर्स 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर में आप अपनी रैंक, कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स यूज करके पॉसिबल कॉलेजेस का इनिशियल आइडिया ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स, फी एंड काउंसलिंग रूल्स वेरीफाई करके ही लीजिए। अब नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इजंट इट? NTA के ऑफिशियल स्टेट वाइज डेटा के अकॉर्डिंग, यस, NTA's ऑफिशियल स्टेट वाइज नीट UG रजिस्टर्ड अपीयर्ड क्वालिफाइड स्टैट्स महाराष्ट्र से 2025 में 2,48,201 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे। 2026 में यही नंबर रिड्यूस होकर 2,22,849 हो गया। दैट इज अ रिडक्शन ऑफ 25,352 रजिस्ट्रेशंस और अप्रोक्सीमेटली 10.21% डिडक्शन। अपीयर्ड कैंडिडेट्स में डिक्लाइन और भी बढ़ा है। In 2025, the number of appeared candidates, they were 2,42,858 versus the number of appeared candidates in 2026, they were 2,11,100. That means a decrease of 41,758, approximately accounting to 17.19% drop. And qualified candidates, in 2025, they were 1,25,727, but in 2026, they are 1,07,304. So, Maharashtra से qualified candidates approximately 18,423 decrease हुए, around 14.65% change. These figures exactly match NTA's official state-wise data. Student के perspective से first reaction हो सकता है, qualified students कम हुए हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। नॉट नेसेसरली। फॉर महाराष्ट्र स्टेट कोटा, फ्यूअर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स प्लस एडिशनल सीट्स कैन इन्फ्लुएंस कंपटीशन फेवरेबली, बट रैंक डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगरी एंड कॉलेज डिमांड ऑल्सो मैटर। एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के केस में स्पेशली केयरफुल रहिए, बिकॉज दीज सीट्स हैव बीन अवेलेबल ऑन ऑल इंडिया बेसिस. Other state eligible candidates also compete.
सो महाराष्ट्र क्वालिफायर्स का फॉल IQ कट ऑफ का डायरेक्ट प्रेडिक्टर नहीं है। अब दूसरी साइड देखिए, सीट अवेलेबिलिटी। 2025 गवर्नमेंट सीट्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, दे आर 5,750। 2026 गवर्नमेंट सीट्स 6,000. That gives an increase of 250 government seats. Private seats are shown increasing from 6,949 to 7,099, an additional of another 150 seats. Total, if I talk about 12,699 seats in 2025 to 13,099 in 2026. So overall NMC listed capacity has increased by 400 MBBS seats. The latest NMC derived state matrix confirms Maharashtra at 6,000 government and 7,099 private MBBS seats, making 13,099 NMC listed seats for the 2026-2027 session. So basically these are NMC listed seats. Because NMC's matrix excludes institutes of national importance. For example, AIIMS Nagpur itself has 125 MBBS seats annually and is separately counselled through MCC. So broad trend क्या है? Seats plus 400. Qualified Maharashtra candidates में decline हुआ 18,423. It looks encouraging, but again, don't use this alone to predict institutional quota cutoffs because IQ competition is not restricted only to Maharashtra qualified students. अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। First, you need to understand that IQ means institutional quota. In Maharashtra, private unaided medical colleges, the 2025 policy provided around 15% institutional quota seats on an all India basis, including eligible other state, NRI and OCI candidates. Now, in this set, the most competitive figure is Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Medical College, Pune. All India rank 98,159 with 15 IQ seats shown. Then KJ Somaiya Medical College, Mumbai. All India rank 1,75,296 again with 15 IQ seats. After that, rank suddenly much higher chala jata hai. Talking about ACPM Medical College, Dhule. The All India closing rank was 5,53,966. Talking about Terna Medical College and Hospital, Nerul, Navi Mumbai. It had the All India closing rank of 5,74,988 with IQ seats 22. Next, talking about Ashwani Rural Medical College Hospital and Research Center, Kumbhari. It had the All India closing rank of about 6,34,272 and IQ seats of about 22. Also now talking about Maharashtra Institute of Medical Education and Research. The All India closing rank was 7,59,765. IQ seats available are 22. So students, notice the massive variation. Same institutional quota label के अंदर भी one college can close near 1 lakh while the another may extend beyond 7 lakhs. But why? Location, college preference, fee, hospital, reputation, infrastructure and seat demand all influence the closing rank. And one more important thing, these ranks are filtered. Maharashtra State MBBS counseling data, quota IQ, and it is for round 3 that I'm actually talking about. Next set और भी interesting है. Now if I talk about Dr. N.Y. Tasgaonkar Institute of Medical Sciences, Karjat, the All India rank closing was 2,35,826. Talking about Dr. Rajendra Gode Medical College, Amravati. It had the All India closing rank of about 3,22,323 and the IQ seats are 22. Now talking about high rank options, Dr. Punjab Rao Deshmukh Memorial Medical College, Amravati. Have a look over here. The All India rank closing
it was 7,67,156. ये डेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग लेसन देता है. Don't reject a college only because last year another private college closed much earlier. Private IQ demand college to college dramatically vary कर सकती है. But remember, higher closing AIR does not automatically mean better opportunity. Sometimes it simply means lower demand, higher cost, location preference, or other institutional factors. कॉलेज चूज करते वक्त केवल मिलेगा या नहीं मत देखिए. हॉस्पिटल एक्सपोजर, पेशेंट लोड, फैकल्टी, हॉस्टल, टोटल फीस एंड लोकेशन ऑल्सो चेक करें. नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट कॉलेजेस. Talking about Indian Institute of Medical Sciences and Research, Jalna. Just have a look over here. The All India rank closing, it was 4,16,811. And the IQ seats are 22. Then talking about Prabhani Medical College, Parbhani. So the All India rank closing, it was 4,27,517. Talking about Dr. Vasantrao Pawar Medical College Hospital and Research Center, Adgaon. So the closing rank over here was 7,22,387. Next, if I talk about Dr. Vittal Rao VK Patil Foundation's Medical College and Hospital, Ahmednagar, the All India closing rank, it was 8,39,020 with IQ seats 30 over here. Now one thing, स्टूडेंट्स अक्सर उल्टा समझ लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट, क्लोजिंग रैंक है 8,39,020 being higher does not mean higher merit. In rank terminology, smaller AIR means stronger rank. So 98,000 is much more competitive than 8,39,000. The high numerical closing rank simply shows that the IQ seat continued to be allotted farther down the rank list during the admission cycle. And again, 2026 में same rank repeat होना compulsory नहीं है. इस last set में range और भी broad है. If I talk about for Srimati Sakubai Narayan Rao Medical College and Research Center, Kopargaon, the All India closing rank was 3,81,644. Then if I talk about for SMBT Institute of Medical Sciences and Research Center, the All India closing rank was 6,84,049. Also, if I talk about for Singhar Technical Education Society Medical College and General Hospital, Ambegaon, over here the All India closing rank, it was 6,84,518, having IQ seats equals to 22. So, if I talk about for these two colleges, yes, they both were having almost identical closing ranks. Then if I talk about for Prakash Institute of Medical Science and Research, Sangli, it had the All India closing rank of 7,42,339 with IQ seats equals to 22. NKP Salve Institute of Medical Sciences and Research Center and Lata Mangeshwar Hospital, Nagpur, had a All India closing rank of 7,72,446 with IQ seats 37. So Maharashtra NEET 2026 aspirants, what should you take away from this analysis? First, Maharashtra's NMC listed MBBS capacity has increased by 400 seats. Second, Maharashtra qualified NEET candidates have fallen by around 18,423 compared with 2025. Third, and this is the most important point, institutional quota can extend admission possibilities much farther in All India rank than normal open or state quota cutoffs at some private colleges. But IQ should never be treated as simply a low rank MBBS shortcut. Before adding any IQ college to your preference list, what you need to check is the eligibility, current 2026 IQ seat metrics, tuition fee, hostel and other charges, hospital exposure, location and previous round-wise closing ranks. And because IQ has an All India component, don't predict 2026 IQ cutoff only from the fall in Maharashtra qualified students. Use 2025 data to create 3 buckets: ambitious college, realistic colleges and backup colleges.
Then revise the list when the official 2026 seat metrics and round-wise vacancies are available. For your personalized college chances, Careers 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें. फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के लिए 8130376334 पर नीट सेंड करें. एंड कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी नीट ऑल इंडिया रैंक क्या है, एंड are you considering Maharashtra institutional quota for MBBS 2026?